Associate sponsor. सच्ची सहेली महिला औषध और राज्य आमर भोट। नमस्कार जिला 3 PM सहित आम रश्मिरंजन आपण स्वागत करुच्ची। नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे। हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खिमजी ज्वेलर्स। Handcrafting blessings since 1936. Kimji. अतनुंक मंतव्यर कड़ा जवाब रखिले सौम्य। कहले ब्लैकमेल शब्दर कौनसी भित्ति नहीं। यह पछरे सुचिंतित योजना रही। मंत्रीपद भୟରେ यात्रा संलाप करुछंती अतनु। बीजेडी रे थाई सौम्य ब्लैकमेलिंग करुथबा कहिथिले अतनु। दिनक परे G20 मानस मंथन। दिल्ली को छुटुछंती विश्वर बड़ बड़ नेता। भारत अभिमुखे बाइडेन को यात्रा आरंभ। अपराह्न आसिबे ब्रिटेन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। सकाळु दिल्ली रे पहुंचले अर्जेंटीना राष्ट्रपति। सुरक्षा दृष्टि हाई अलर्ट रे समग्र राजधानी। विश्व नेतांको स्वागत पई प्रस्तुत भारत। G20 सम्मेलन पई सज्जित भारत मंडपम। विश्वर भविष्यत को नहीं भारत माटी रे हेबो महामंथन। सम्मेलन पूर्व विश्व को प्रधानमंत्री मोदी का प्रगति संदेश। समग्र विश्व को गोटे परिवार भावे ग्रहण करने को आह्वान। G20 रे संबलपुरी गीतर धूम। संबलपुरी गीतरे विदेशी अतिथि को स्वागत। वेलकम बेले निजको अटकाई पारिलेनी विदेशी अतिथि। गीतर ताले ताले नाचिले अंतर्जातीय मुद्रा पांठीर मुख्य क्रिस्टालिना जॉर्जिएभा। धर्मेंद्र प्रधान ट्वीट करी लिखिले डिफिकल्ट टू सीरियस। प्राथमिक शिक्षकों जोरदार आंदोलन। ब्लॉक शिक्षाधिकारी कार्यालय सम्मुखें गुरुंक गर्जन। आंदोलन में 1 लाख रु अधिक शिक्षक शिक्षयित्री। विरोधी दल नेता कहले शिक्षकों दाबी को गुरुत्व दियंतु राज्य सरकार। सेपटे आंदोलनरत शिक्षक माननकु भेटिले बीजेपी टीम। बीजेडी एवं मुख्यमंत्री 5T सचिवों उपरे बर्षिले विरोधी दल नेता जयनारायण मिश्र। कहिले शासक दलर नाही स्वाभिमान। 5T सचिवों शरण पशिछि बीजेडी। कांग्रेस निलंबित हेले विधायक सुर राउतराय पुओ मनमथ राउतराय। कांग्रेस श्रृंखला कमिटी पक्षरु कार्यानुष्ठान। कांग्रेस छिड़ा हेबेनी बोली 2 दिन तले कहिथिले मनमथ। पीसीसी सभापति कहले विशृंखला बर्दाश्त करा जिवनी। सुर कहले दल पुनर्विचार कर। राज्य सरकार 23 वर्षर सफलता। हैदराबाद रे दुर्घटना रे दादन खटिबा को जाइथिबा बंडा घाटीर 3 युवकंकर मृत्यु। जीवन मरण सह संघर्ष करुछंती आउ 2 जण। कुआडे गला सरकारक आदिम आदिवासी बंडांक विकास योजना। एबे संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। मंत्री अतनुंक मंतव्यर जवाब रखिले सौम्य। कहले मु एभली मंतव्य को आदौ गुरुत्व देबा को चाहू नाही। जे माने कहउछंती से माने कोन बीजेडी रो मनोनीत सत्वाधिकारी। या पछरे गोटिए सुचिंतित योजना रही। जात्रा पार्टीर संलाप रचिला भली रचना करुछंती बीजेडी विधायक और मंत्री। ब्लैकमेलर शब्दर कौनसी भित्ति नाही। या पूर्व आज मंत्री अतनु कहते बीजेडी रे थाई सौम्य पट्टनायक ब्लैकमेलिंग करुछंती। सौम्य पट्टनायक लेखार प्रभाव लोकों उपरे पड़िबो नाही। दल को मुख्यमंत्री दफ्तर को बारंबार टार्गेट करुछंती ताहा ठीक नुहे। सेपटे सौम्य को समर्थन करिसेंती पीसीसी सभापति शरद पट्टनायक। सौम्य बारंबार निज कलम आम घर हालचाल रे आत्मविभोर प्रशासक एवं असहाय राजनेता शीर्षक लेखा माध्यम 5T सचिवों को आटाक करने सह राज्यर नेता मंत्री माने क्षमताहीन हो पड़ता नहीं प्रश्न उठाई सौम्य। सीधा सड़क आम देखा G20 उपरे प्रेस मीट। This committee has been meeting regularly. It's met at least 9 times formally, but many times informally, and has provided
extensive guidance on every aspect and overseen every aspect of the presidency's organization and management. So I think that was important. Now, on the summit itself, of course, Foreign Secretary and Sherpa will take you through the program elements, but it's important for you to know what else is there and what are the activities and exhibitions and other events which are within the Bharat Mandapam, within the G20 summit complex. Of course, the media center is one that you have seen. Both halls 4 and 5 have been earmarked for the media center. We expect to host between 2,000 and 3,000 international and domestic media here. It will be a state-of-the-art media center with over 1,300 workstations, high-speed internet, and Additional Secretary XP would have communicated to you the other aspects of this media center. There is an emphasis on the cultural aspects of our presidency as well. There is a very unique exhibition which is called the Cultural Corridor, which will be on display at the convention center. This involves the display of cultural artifacts and objects from different countries, both tangible and intangible heritage, but also natural heritage. So this has some very, very interesting exhibits, which the details of which will be available with you. We also have an immersive display, which has, again, some of the best illustrations of every country that is a part of our G20 presidency. And all of this, again, is at the convention center. There's a democracy cube, which is also there. And what we will certainly do is that we'll make this available, we'll make this open to the media and the public after we finish the immediate summit. And this would be a very interesting exhibition to see. Besides that, we have the Mother of Democracy exhibition. India is the largest democracy, vibrant democracy over the ages, has arranged an exhibition which would be essentially narrating the 7,000-year tradition of democracy in our country from the ancient to the modern. There will be 26 interactive panels which would be available in all of the G20 languages. There are apparently 16 languages in which this will be available. There is also a bronze replica of a girl from the Sindhu Saraswati era, 2,500 to 3,500 years before. And this is a very unique part of the exhibition, at the center of the exhibition. And there will also be someone who will greet everybody. It's artificial intelligence driven, so it's a technology oriented platform. And of course, the person who will greet will also provide an introduction to India's age-old democratic traditions in their respective languages. You are also aware that we will have, at the time of the dinner that will be hosted tomorrow by our President, there will be a musical ensemble which will play in the background. This, of course, will represent, again, musicians from all parts of our country, but it will also include musical traditions of every nature, whether it's Hindustani, Carnatic, folk, bhajans. Every aspect of music in our country will be covered by these 77 musicians, who would also include young students, people who have some disabilities, but also people who are from different walks of life across our country. They will also be displaying some very rare instruments, musical instruments, which are hardly ever seen or played in our country, but this is something that is an opportunity for us to see so many rare instruments coming together in this particular area. Now, there will be a strong emphasis on technology, especially technology that is linked to public, digital public infrastructure. And in that context, we will have a few exhibitions at the media center. If you enter the foyer of the media center, you will see a display by our Ministry of Information Technology, which is basically a Digital India Experience Zone, which will have the display of all of the mobile apps and the platforms under which we have arranged to deliver development to the grassroots levels in India, right from Aadhaar to UPI, and this entire India stack will be available. And if any of you do fall sick or have any medical issues, please ensure that you go and connect with eSanjeevani, a digital platform that will have a doctor advise you immediately on the spot. Similarly, we have a Reserve Bank of India Innovation Hub, which is again in the media center. And this Innovation Hub will display technologies that fintech, which has not yet been introduced to the public domain. These are still in the pilot stages. One of them is the central bank digital currency,
through which even international media who are here, who don't have bank accounts in India, will be able to get some money in their mobile wallets and will be able to use that digitally to buy products in our crafts mela, which will be in the adjoining hall, hall number 3. And this crafts mela will also, each stall of the crafts mela, which represents a different state or union territory of India, displaying, as Sherpa mentioned, the ODOP products and geographical indicator products, will have a QR code compatible with your mobile wallet, the digital currency, and with the UPI. We will also have a frictionless credit display, which basically again is a cutting-edge technology under which any credit to be given, say, to our farmers, the information relating to that would be immediately available on your mobile phone or your iPad, from the land records to your Aadhaar to your previous credit history. And this will enable credit to be given within a few minutes of time with each of the farmers. And so from that point of view, I think we also have, I hope all of you have downloaded our digital app, the G20 India digital app, which is again a state-of-the-art app, which enables you to get this in any language in the G20. You can get it in Portuguese, in German, in Japanese. And this will also enable you to talk to anybody who doesn't understand your language, say from Hindi to Japanese or from Portuguese to German. It will be instant conversation through the app. You can navigate from one part of the Bharat Mandapam to any other part of this complex. It will enable you to get there without a problem. And any information that you may need on our presidency, on the G20, on India, UPI, any aspects of this is available. And of course, if you feel like a yoga break, that's also there on our app. So I'll stop here. I'm sure there are many other things, but we will stop. Thank you. Thank you very much, sir. May I hand over to Foreign Secretary Shivinay Quatra. Thank you very much, and good afternoon to friends from the media, both domestic and international. I have 6 brief points to make, besides what has already been shared by my colleagues, senior colleagues, Sherpa's Chief Coordinator and Secretary, Department of Economic Affairs. Point number first, if you really want to get a sense of India's vision, priorities and approach to the G20 presidency, I would encourage all of you to read the op-ed that the Honorable Prime Minister of India has written yesterday. It captures, it distilled a sense of how India envisions and looks at the ongoing G20 presidency of India. 2, the coming together of the 41 heads of delegations, heads of state, government, heads of international organization in India starting yesterday is under Prime Minister's personal leadership and direction. It is essentially a celebration of the coming together of the G20 family. Our Sherpa mentioned earlier, it's the largest ever participation of the Global South in India. 3, whether it concerns India's national priorities with regard to G20 or the priorities of G20 countries as a collective, as also the concerns and interests of the Global South. The specifics of the agenda which the Sherpa and the Department of Economic Affairs Secretary mentioned, they have been structured in a most inclusive and the harmonious concepts of one earth, one family, one future. 4th, very briefly with regard to the program of the G20 summit, the summit official conference program is structured around 2 sessions. First one earth starting tomorrow morning, one family tomorrow afternoon, and one future in the morning of the 10th. Besides 3 sessions of the conference, there would also be a couple of sideline events which are currently being structured involving India and other heads of the state who are visiting us here. 3rd, a dinner by the Honorable President of India tomorrow. 4th, a visit to the Rajghat to pay homage to Mahatma Gandhi. And 5th, a spouses program. These would be the broad 5 elements of the summit. And the last 5th point which I wanted to make, Honorable Prime Minister of India will also be hosting several sideline bilateral meetings
during the course of this G20 summit with the visiting heads of state governments and the other leaders who are going to be in Delhi, as I said, starting yesterday till the departure over 10th and 11th. I would stop here and see if we have any questions on this. Thank you very much, sir. May I lay the ground rules before I open the... Please sit down. Thank you. Please introduce yourselves and the organization you represent. We will take take questions in a group because we don't have time. Let me start with Manish here, TV9. Microphones will come to you. Please wait. समय गोटे ब्रेक ब्रेक पर खूब शीघ्र फेरुछु। चलो देवमाली चलो राज्य आमर भोट आमर सरकार आमर आम विकास भी हेबो आम कथारे चोरी चपाटी पिसीर आमे करिबु विरोध। आपण करिबे निष्पत्ति महापंचायत रविवार राति 8टारे। लोक कल्याण पई गणतंत्र और सरकार माଳ माଳ योजना योजनार लाभ मिलुची तो सर्वसाधारण को केउ योजनार स्थिति कौन पास फेल एवरेज ना एक्सीलेंट आपण करिवे आकलन देखंतु लोक कल्याण रविवार राति 10:30 रे। ब्रेक पर स्वागत। मंत्री अतनु मंतव्यर जवाब रखिले सौम्य कहले मु एभली मंतव्य को आदौ गुरुत्व देवा चाहू ना जो मैंने कहते से कौन बीजेडी मनोनीत सत्ताधिकारी यह पछरे गोटे सुचिंतित योजना रही जात्रापाटीर संलाप रचिला भली रचना करुछंती बीजेडी विधायक और मंत्री ब्लैकमेल शब्दर कौन से भित्ति नहीं। यह पूर्व आज मंत्री अतनु कहते बीजेडी रे थाई सौम्य पट्टनायक ब्लैकमेलिंग करुछंती। सौम्य पट्टनायक लेखार प्रभाव लोकों ऊपर पड़िबो नाही। दल को मुख्यमंत्री दफ्तर को बारंबार टार्गेट करुछंती ताहा ठीक नुहे। सेपटे सौम्य को समर्थन करिसेंती पीसीसी सभापति शरद पट्टनायक। सौम्य बारंबार निज कलम आम घर हालचाल रे आत्मनिर्भर प्रशासक एवं असहाय राजनेता शीर्षक लेखा माध्यम 5T सचिवों को अटैक करने सह राज्यर नेता मंत्री माने क्षमताहीन हो पड़ता नहीं प्रश्न उठाई। बाबू कौन एवं कौन कर राजनीतिक इतिहास को आपड़ जदि देखिए केते थर दल परिवर्तन करछंती को दल रु कोठी आछंती एठी बर्तन केते नंबर रे पहुंचलेनी पुणी आगामी दिन रे कुआड को जिवे से संपर्क में मो अपेक्षा आपण माने गणमाध्यम प्रतिनिधि माने अधिक जानिछंती। किंतु विगत दिन रे आजी मध्य मोर गोटे कथा एठी रहइबो जे गोटे दल रे रही ताकू ब्लैकमेलिंग करिवार से जो प्रयास जारी करछंती ता केबे तांकर लक्ष्य रे से पहुंची परिबेनी। अतुल बाबू अनेक अनुभवी लोक ताकू कुआ जाय पाटुकरा गांधी को पुओ बोली से पाटुकरा गांधी एते जहाँ मिछ कथा कहबे ए गांधी शब्द मते अपप्रयोग हो बोली ताको विषय में मो समान तो टिप्पणी सुनि नाही आपण को जहाँ जानिबा को पाउछि से संपर्क रे उत्तर दे समानकर गुरुत्व को बेसी बढ़ाइबा को चाहुना। सेमाने जे निज मनरु एक कथा कहउछन्ती ता मध्ये मु विश्वास करू नाही। कौन कारण चाप पड़े कौन निर्दिष्ट व्यक्ति से कथा कहूँ बाध्य होते पेट पाटना कथा सब थे हरई पुणी आउ थे मंत्री पद हरई गत काली जड़े मंत्री पद हरई से मंत्री पद कथा कहले आउ जड़े मंत्री पद हरइबे बोली डरी ये सब कथा कहते बिजेडी साधारण लोक ठीक भाव में बुझीपार दलर स्वार्थ कौन होगा दरकार कौन कहवा दरकार कौन करवा दरकार 15 दिन पर्यंत अपेक्षा कहीं कले मुझे 2 सप्ताह तल मंतव्य देते कौन मंतव्य देते आत्मनिर्भर प्रशासक
असहाय राजनेता एमानकर वक्तव्य मो कथा को प्रमाणित करुच्ची ये राजनेता मैंने एत असहाय जे ऊपर जहाँ कहुच्छी से कथा कहवाई बाध्य हो कलबल हो ना मो कथा कहूँ स्वार्थ पाई कहबी ओडार स्वार्थ पाई से मो मास्टर जे मुझे प्रश्न उत्तर देवी से किए प्रश्न पचार कि प्रश्न अवांतर प्रश्न उत्तर दि जाए आप अभियोग करूँ ମୁଁ 5 ଥର ଆସିଛି କି 50 ଥର ଆସିଛି ସେ ହିସାବରେ ଅନୁଭବ ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ଦଳରୁ ଦିଆହେଇକି ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାକୁ 5 ଥର ଆସିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ହିସାବ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ସୌମ୍ୟବାବୁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ୱାଜ୍ ଏ ପ୍ରଫେସର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦାନ ନାହିଁ ନା ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ ନା କିଛି ଯାହା ଲେଖିଲେ ଯଥାର୍ଥ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପାଠକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ମାନେ जोटा देखी से लेखा जाक जोटा नियम रे नहीं जोटा संविधान रे नहीं जड़े कले तो चारिआडे लोक देखिए ना जड़े लोक तो देखिबनी ना सारा ओडिशा लोक देखुंत बीजेडी कौन कर 5T कौन कर आज प्राथमिक शिक्षकों कार्य बंद आंदोलन केंद्रीय हार में दरमा जूनियर शिक्षकों नियमित मान्यता गणशिक्षकों एक्स कैडर हटाइबा परी दाबी नहीं आंदोलन को ओह्लाई शिक्षक और शिक्षयित्री कार्य बंद करिसेंती निखिल उत्कल प्राथमिक शिक्षक फेडरेशन पाखापाखि 1 लाख रु अधिक शिक्षक शिक्षयित्री आंदोलन को ओह्लाई जहाँफल पाठपढ़ा एक प्रकार ठप होबार आशंका देखा शिक्षकों ही आंदोलन को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट विरोधी दल नेता जय नारायण मिश्र कहते पिला भविष्य घड़ुवा शिक्षकों दाबी को प्राथमिकता दिंतु राज्य सरकार नहेले राज्यर शिक्षा व्यवस्था भुशुड़ी पड़ो बोली कहते जय नारायण सरकार शिक्षार मूलदुआ कहते प्राथमिक शिक्षा को किंतु प्राथमिक शिक्षक माने आंदोलन रे बसिछंती तांकर युक्तियुक्त दाबी नहीं सरकार से प्रति कौन प्रकार कर्णपात करूनाहांती एटा बड़ दुखर कथा जो माने देशर भविष्य समाजर भविष्य तैयारी करेंगे से दाबी को गुरुत्व दे सरकार तांकर समाधान केमती करेंगे से दिगरे व्यवस्था करिवार आवश्यकता रही जदि प्राथमिक शिक्षा विपर्यस्त हो ताहेले संपूर्ण समाज विपर्यस्त हो ओडिशा सरकार तो पूरा ओडिया शिक्षा को विपर्यस्त कर सारे आउ भी जोटा बाकी अच्छी सरकार अविलंबे शिक्षक मान डाकी आलोचना करी तांकर समस्या समाधान करने मु दाबी करूँ विभिन्न दाबी नहीं दीर्घदिन हेब आंदोलनरत प्राथमिक शिक्षकों को भेटिला बीजेपी प्रतिनिधि दल पूर्वतन बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती नेतृत्व में शिक्षक मानक भेटी बीजेपी टीम प्राथमिक शिक्षक मानकर विभिन्न दाबी संपर्क में से आलोचना करिछि प्रतिनिधि दल भुवनेश्वर लोयर पीएमजी राज्य प्राथमिक एक्स कैडर शिक्षक अनेक दिन धरी धारणा बसिथिबा बेले सरकार कौनसी कथा शुणी नथिबा सेमाने अभियोग करिसेंती राज्य सरकार तुरंत शिक्षक मानकर न्याय दाबी पूरण करंतु बोली बीजेपी दाबी रखिछि पक्षे ओडिशा प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था ये विपर्यस्त स्थिति को उत्पन्न होइछि आज अभिभावक माने चिंतित अछंती आज नुआ भारतर ये अमृत कालखंड रे ये जदि प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था एभली विपर्यस्त हम ताले ओडिशार भविष्य कौन हम आम समस्ते चिंतित अच्छु से विषय तो मोर सरकार को परामर्श जे ये अमृत कालखंड रे प्राथमिक स्कूल जोटा शिक्षार मूलदुआ से मूलदुआ को दयाकोरी आंकु दोहलांतु नहीं मूलदुआ को सशक्त कले आगामी कालीर ओडिशार नागरिक सशक्त हम ओडिशा सशक्त हम तो से दृष्टि प्राथमिक शिक्षक मानकर समस्या को तुरंत समाधान करूँ विषम कटक रे प्राथमिक शिक्षकों आंदोलन प्रभाव पूरा शून आज सारा राज्य में प्राथमिक शिक्षकों आंदोलन जारी रही बेले प्रत्येक बीओ कार्यालय सम्मुख में जोरदार प्रतिवाद करा जाउछि किंतु रायगड़ा जिला विषम कटक ठारे यार प्रभाव कौनसी देखा मिलनी विषम कटक बीओ कार्यालय खोला रही स्कूल गुड़िक स्वाभाविक भाव छात्र छात्री पाठ पढ़ुवार दृश्य देखा मिली सेपटे घटना को नहीं जिला स्तरीय नेतृत्व माने शेष पर्यायर कौन निष्पत्ति नहीं नथिबारु ब्लॉक स्तर में आंदोलन को कार्यकारी करिपारिनु बोली कहिसेंती विषम कटक प्राथमिक शिक्षक संघर उपसभापति
तमिलनाडु मंत्री उदयनाथ स्टालिन मंतव्य को नहीं विश्व हिंदू परिषद ओडिशा तरफरु निंदा। तांको जेजेबापा मुख्यमंत्री थिले, एबे तांको बापा मुख्यमंत्री अछंती। तांको जेजेबापा समय रे राष्ट्र धर्म ग्रहण करथिले, सेबेठारु से सनातन धर्म विरोध रे मंतव्य दे आसुछंती। उदयनाथ जो मंतव्य देइछंती ताहा एक दंडनीय अपराध बोली विश्व हिंदू परिषद पक्षरु कुहा जाइछि। ओडिशा तरफरु आमे तीव्र यार विरोध करुचु। तमिलनाडु जड़े मंत्री उदयनाथ स्टालिन जहाँकर जेजेबापा सेठिकार भी मुख्यमंत्री थे, एवं तांकर बापा मुख्यमंत्री अच्छा। जेजेबापा समय सी ख्रीष्ट धर्म ग्रहण करते एवं सेबेठारु से हिंदू सनातन धर्म विरुद्ध से सेबेठारु युद्धम दे डाकरा देइचंती। ये जो सनातन संस्कृति ताकू डेंगू मलेरिया सहित तुलना करी ताकू संपूर्ण रूप से समाप्त करने जो प्रकार विषय उपस्थापन करिसेंती सेथिपई संपूर्ण हिंदू समाज अत्यंत उत्क्षिप्त अछि एवं विश्व हिंदू परिषद यार तीव्र विरोध करने सह दृढ़ निंदा करुछि। समय शेष होइछि। जिला पीएम को इठ रखिबा। नमस्कार।